नमस्कार। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। एक बेहद खूबसूरत शाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खूबसूरत इसलिए कहा क्योंकि आप सब यहाँ इस ख़ास मौके पर उपस्थित हैं और आपकी वजह से आज की इस शाम में 4 चांद लगे हैं, तो आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। संजय रुनवाल फाउंडेशन की ओर से हमारे सम्माननीय अतिथियों और उपस्थित आप सभी का मैं नीरजा आप्टे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये शाम, जी बिल्कुल, आप जब चाहें तब तालियां बजा सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा और यहाँ से जो बात करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। आज की ये शाम कुछ ख़ास है। कार्यक्रम के अतिथि विशेष हैं और आज यहाँ आप जो भी देखेंगे सुनेंगे वो मेरी और आपकी यानी हर किसी की सोच को, जीवन के प्रति हमारे नज़रियों को एक नई सार्थक उड़ान देने की क्षमता से भरपूर है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये शाम हम में से हर एक को बहुत कुछ देने वाली है। थॉटफुल रिफ्लेक्शंस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, डॉक्टर संजय रुनवाल द्वारा लिखी गई किताब का प्रकाशन आप सबकी साक्षी में आज संपन्न होने वाला है। जीवन के बदलते रंगों, मानवीय भावनाओं, विचारों, कृति, संस्कृति, सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन दृष्टि का प्रतिबिंब है ये पुस्तक। जी नहीं, ये किसी संत या महात्मा की लिखी किताब नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ही जैसे यानी हमारे मित्र, जिन्होंने अपने अनुभवों का सार बहुत ही सरल भाषा में कागज़ पर उतारा है। जीवन में रिश्तों की अहमियत, आनंद, समाधान और जीवन में आने वाली कई चुनौतियों का उत्तर इसमें हमें मिलेगा। स्वानुभव, चिंतन और मंथन का प्रतिबिंब यानी थॉटफुल रिफ्लेक्शंस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं कई गणमान्य अतिथि, लेकिन जिस तरह मैंने आपका स्वागत किया वैसे ही बहुत दूर से, बहुत दूर यानी बहुत दूर, हज़ारों मील दूर कोई है जो इस ख़ास मौके पर आप सबका स्वागत करना चाहती हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं एक बेहद प्रतिभाशाली और अपने पूरे ख़ानदान का नाम रोशन करने वाली ऐसी एक बेहद सुंदर सी किसी यंग लेडी की ओर। मुझे लगता है मैं नाम ना बताऊं और सीधे हम उनका संदेश देखें। Hi everyone. It's my great pleasure to welcome all of you for the launch of Dad's latest book, Thoughtful Reflections for a Meaningful Life. I would also like to extend a warm welcome to everyone who's joining us through YouTube Live. I wish I was there in person, speaking from the podium where Neeraj Aunty is currently standing. But this video is my best attempt at conveying how excited I am and how proud I am sitting thousands of miles away in New York for the launch of Dad's latest book. Again, I wish I was there in person, but let me not waste another minute and welcome all of you and wish you a wonderful time
as you listen to our guest speakers, our guest of honor, Wing Commander Kala Uncle, and our young but most accomplished chief guest, Asha Seth, and of course, the author himself. Without further ado, I'll hand things back over to Neerja Aunty. But again, I would like to wish Dad the best for the launch of his new book, yet another feather in his cap, and thank you all for gracing this occasion. ये थी प्रियंका रुणवाल, जो बैठी है न्यूयॉर्क में, लेकिन उनका मन यहाँ हमारे बीच है, और उनकी ओर से ये बहुत ही सुंदर सा स्वागत आप सभी का। चलिए हम आगे चलते हैं। इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय विशेष अतिथि, सेवानिवृत्त विंग कमांडर विद्या कांजी काला, और हमारी मुख्य अतिथि हैं आशा सेठ। मैं संजय रुणवाल फाउंडेशन के डायरेक्टर और थॉटफुल रिफ्लेक्शंस फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के लेखक डॉक्टर संजय रुणवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे विशेष अतिथि विंग कमांडर विद्या कांजी काला को मंच पर लेकर आएं। इसी के साथ मैं आग्रह करती हूँ संजय रुणवाल फाउंडेशन की दूसरी डायरेक्टर प्रतिभा रुणवाल जी से कि वो हमारी मुख्य अतिथि आशा सेठ को मंच पर लेकर आएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हम पुनश्च हमारे इन दोनों अतिथियों का इस मंच पर संजय रुणवाल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय परंपरानुसार दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से दीप प्रज्वलन का अनुरोध करती हूँ। विंग कमांडर विद्या कांजी काला, आशा सेठ, डॉक्टर संजय रुणवाल और प्रतिभा रुणवाल जी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रार्थना के साथ आइए हम भी अपने अंतर का दीप जलाएं। धन्यवाद। आपसे अनुरोध, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपसे अनुरोध, कृपया स्थान ग्रहण करें। आज इस मंच पर आप जो देख पा रहे हैं उसे मैं थोड़ा सा अलग देख रही हूँ, क्योंकि आज इस शाम यहाँ पर एयर पावर और विमेन पावर दोनों का सुंदर मिलाप है, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग की याद दिला रहा है ना।
तो आपकी तालियां ही ये कह रही हैं कि एयरफोर्स और हमारी फीमेल ऑफिसर्स को दिल से सलाम। और अब हम तालियों की गूंज के साथ स्वागत करना चाहेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर विद्याकांत जी काला का। मैं डॉक्टर संजय रुनवाल से आपका सम्मान करने का अनुरोध करती हूँ। प्रतिभा रुनवाल जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारी मुख्य अतिथि आशा सेठ का सम्मान करें। ये आपको पार्शलिटी नहीं लगी? इनको बहुत सुंदर सा कुछ मिला है और यही खासियत है हमारे विमेन पावर की। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के कार्यक्रम की एक थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको बताना चाहती हूँ। पुस्तक प्रकाशन है, हम सभी जानते हैं, और उसके बाद डॉक्टर संजय रुनवाल से एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत होगी जिसके ज़रिए हम उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को जान सकेंगे। उनकी लिखी पहली पुस्तक ह्यूमनोलॉजी या मानव विज्ञान इस विषय पर है, हाउ टू लिव लाइफ, SBOP लिविंग फॉर लाइफ आफ्टर 55-60, गोल्डन बुक अवार्ड 2025 से पुरस्कृत हुई है। ये बहुत ख़ास बात है और बहुत ही कम समय में खासी लोकप्रियता इस पुस्तक को मिली है और ये मराठी भाषा में अनुवादित हुई है और सितंबर माह में ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम जयपुर में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली है। मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर संजय रुनवाल द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें सिर्फ कागज़ के पन्ने नहीं हैं, बल्कि इन शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की ताकत है। थॉटफुल रिफ्लेक्शंस किसी विशेष आयु वर्ग या उम्र के लिए नहीं है, जैसे पहली किताब है, बल्कि 15 से 95 तक या उससे आगे भी अगर कोई हो तो उन सभी के लिए मार्गदर्शक है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी इन पुस्तकों को देखना चाहेंगे, उन्हें हाथ में लेना चाहेंगे। तो आपको बता दूँ कि बिजनेस स्ट्रैटेजी पर लिखी हुई उनकी पुस्तकें SBOP लिविंग और थॉटफुल रिफ्लेक्शंस, जिसका प्रकाशन होने वाला है, वो भी बाहर काउंटर पर उपलब्ध रहेंगी। शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म को साधने के लिए कड़ी तपस्या, त्याग और समर्पण आवश्यक होता है। डॉक्टर संजय रुनवाल ने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीख कर, परिश्रम से परिष्कृत कर इस शब्द ब्रह्म को पुस्तक रूप में साकार किया है। इतने खूबसूरत लेकिन सरल शब्दों में इतनी सारी बातें इन पुस्तकों में हैं जो हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि ये मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं। इसीलिए इन पुस्तकों को अपने संग्रह में अवश्य रखिएगा, ये मेरा आग्रह है। अपने प्रियजनों को भेंट दीजिए। घर में जो वयस्क हैं उन्हें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ये एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसे आप मित्र, परिवार या इवन ऑफिस के किसी इवेंट में भी दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। और यकीन मानिए, जिसे भी ये किताबें मिलेंगी वो निश्चित ही बेहतर ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ेगा और पूरे दिल से आपको, यानी जो किताब आपने उन्हें गिफ्ट की है, तो आपको धन्यवाद भी कहेगा। और एक बात, कार्यक्रम के बाद स्नेह भोज में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो यानी सारी चिंता परेशानियां भूलकर शांति से बैठिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए, क्योंकि घर जाकर खाना बनाने की कोई चिंता नहीं है। काउंटर पर आप पुस्तक खरीद कर लेखक के हस्ताक्षर भी ले सकते हैं और अगर आप भाग्यशाली हैं तो उनके साथ
पुस्तक पर हस्ताक्षर के साथ ही आपको उनके साथ एक फ़ोटो भी मिलेगा। तो देख लीजिए कि किसका भाग्य है ऐसा कि लेखक के साथ उनका फ़ोटो मिले। तो बस यही कहूँगी कि इस अवसर का लाभ ज़रूर लें, और ये भी बता दूं कि लेखक हर पुस्तक पर हस्ताक्षर के लिए आखिरी समय तक वहीं पर रहेंगे। तो आप ऐसा न समझें कि बहुत देर हो गई है तो शायद अब हमें ये ना मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आग्रह यही करूँगी कि पुस्तकें ज़रूर खरीदें। तो चलिए अब कार्यक्रम में मैं आपको आगे लिए चलती हूँ, और हमारे बीच जो अतिथि हैं जो बहुत ख़ास हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। Friends, we are happy and honored to have Wing Commander Vidyakant Kalaji with us this evening. Let me introduce our guest of honor, Wing Commander Vidyakantji Kala. He is an alumni of Sainik School Chittorgarh, MNIT Jaipur, IIT Kharagpur and Defence Service Staff College, Wellington. He has worked in Indian Air Force for 21 years as an engineer, wherein he got an opportunity to work on jet aircraft, surface-to-air missile, radar, besides communication and navigation aids. He played a key role in commissioning of India's first indigenous radar developed by HAL and installed at Air Force Academy, Dindigul. He was awarded with Vice Chief of Air Staff Commendation for his services in AIR headquarters. Subsequent to IAF, he joined hands with his friends in US to start India Development Center by name IDEAS. Revenue management system developed by IDEAS is in use across the globe in more than 10,000 hotels today, including major global chains. This company is now part of SAS. He was a member of American Business Club, set up by US Consulate Mumbai to promote Indo-American business. He believes in giving back to community and has given his services to social organizations like Digambar Jain Mahasmiti, which is focused on Jain community, and Jain Shiksha Samriddhi, which is focused in educating poorer sections of society in backward areas of Madhya Pradesh. He is currently supporting My Crack the Wellness Code Foundation as Managing Director, with vision to impact the mind-body wellness of 50 lakhs Indians in 5 years by educating, inspiring, empowering, and impacting individuals and communities to nurture well-being and balance in every aspect of life. With big round of applause, I request Wing Commander Vidyakant Kalaji to please share his thoughts with us. Jai Hind and good evening, everyone. Let me put my papers in order. So, Mrs. Asha Seth, Dr. Sanjay Runwal, Mrs. Pratibha Runwal, esteemed guests, ladies and gentlemen. I'm honored to stand here today as the guest of honor for the launch of Dr. Sanjay's book, Thoughtful Reflections for a Meaningful Life. Today, I take this opportunity to share my understanding of Dr. Sanjay as an individual, as also some of his recent work. As an alumnus of Malviya National Institute of Technology, Jaipur, I am delighted to share a connection with Sanjay, who graduated in 1983, while I graduated in 1977. Incidentally, we both also went to Sainik schools. He went to Bijapur and I went to Chittorgarh. हमारी पहली मुलाकात 2017 में हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई के एक्टिविटी के संदर्भ में हुई थी। उसके बाद विचार मिले, हमारे बातों का आदान प्रदान हुआ और मिलने का सिलसिला चलता रहा। पहले एल्यूमिनाई बॉडी के संदर्भ में
और उसके बाद जहाँ पे संजय पुणे चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद हमारी फाउंडेशन जिसके अभी जिक्र किया, माई क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन, वहाँ के स्ट्रेटजी एडवाइज़र के रूप के अंदर। दो शब्द मैं CWC के बारे में बोलना चाहूँगा। CWC एक गैर सरकारी संस्था है, या यूँ कहें कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका उद्देश्य जैसा भी आपने सुना 5 वर्षों में 50 लाख भारतीयों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। वो इसलिए कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके लिए हम स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के क्षेत्रों में व्यक्तियों और समुदायों को शिक्षित करते हैं। हेल्थ हीरो के जीवंत कहानियों से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई अगर मेरे को जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसको रिजॉल्व किया, रिवर्स किया, तो आई शेयर माई स्टोरी विद पीपल कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। उसके साथ ही हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र के अंदर कैसे वो आपको मॉनिटर करने में हेल्प करती हैं, और जब आप किसी चीज़ को मॉनिटर करते हो तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। हमारे विभिन्न कार्यक्रम में से एक व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जहां हम छात्रों, शिक्षकों और माता पिता के बीच स्वास्थ्य जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के साथ काम करते हैं। इसके लिए हम लोग राजस्थान सरकार से एक MOU भी साइन कर रहे हैं। MOU साइन होने के बाद 15 स्कूलों में हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, and hopefully we succeed so that it becomes a program across the state and then across the country. एक अन्य फोकस क्षेत्र हमारा जो है वो वुमेन वेलनेस, जहां हम मासिक धर्म और मानसिक कल्याण से लेकर नॉन कम्युनिकेबल या गैर संचारी रोगों और जीवन शैली जागरूकता के मुद्दों को संबोधित करते हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी हम लोग एक हेल्दी एजिंग प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 सालों में हम 20 लाख से ज़्यादा देशवासियों तक अपनी बात पहुंचा सके हैं, और जैसा कि आपने सुना हमारा टारगेट 50 लाख का है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये टारगेट हम समय से पहले क्रॉस करेंगे। और इस सब के अंदर अपनी व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर संजय हमारी फाउंडेशन का मार्गदर्शन करने में सदैव तत्पर रहते हैं और हमें बहुमूल्य सुझाव देते रहते हैं। उनके योगदान हमारे कार्यक्रमों को आकार देने और प्रभावशाली बनाने में अमूल्य रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से उनका साधुवाद, आभार, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। MNIT एल्यूमिनाई और CWC से जुड़े कार्य के दौरान मुझे संजय के साथ काम करने का और उनको नज़दीक से समझने का मौका मिला। उनकी जीवन यात्रा के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे एक पुस्तक की याद आ गई जो मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी। उस पुस्तक का नाम था द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोगों ने वो काफ़ी फेमस पुस्तक पढ़ी होगी, रॉबिन शर्मा की। एंड संजय, ही इज़ ट्रूली अकिन टू अ मॉन्क who sold his Ferrari. You know, it was interesting to hear him say कि भाई one day I realized कि मेरा इस दुनिया में आगमन सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं हुआ है. There is something more to life. There is some higher purpose for life. And he is one who is walking the talk. So hats off to you, Sanjay, for taking that amazing step. एक सफल व्यावसायिक कैरियर को शुरू से स्थापित करने से लेकर स्ट्रेटेजिक मार्गदर्शन, शिक्षा और लेखन के माध्यम से समाज को वापस देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने तक, संजय, आपकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। आपकी 5E फिलॉसफी, नेमली एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड एक्सीलेंस, आपकी कार्यशैली में साफ झलकती है। आपकी लिखी हुई किताबों द डीमिस्टिफाइंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ टू लिव लाइफ SBOP ने बहुत सारे पाठकों का जीवन पर प्रभाव डाला है। इंसिडेंटली, जैसा कि आपने सुना कि इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट आइटम, हमने कम से कम दुनिया भर में 150 से ज़्यादा लोगों की ये पुस्तक गिफ्ट करी है और उनके जो रिस्पॉन्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, दे जस्ट अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू, संजय। I have also seen and heard firsthand glowing tributes from your students who went through your course on strategy.
This course, as I understand, was focused towards self-owned businesses to help them grow faster. Your retire, rewire, refire philosophy, articulated in your book, How to Live Life SBOP, is a testament to your innovative thinking. You don't retire, and start taking rest. There's a lot of life still left, especially when the lifespan is going up. So use those years productively and gainfully for benefit of society. So what is remarkable how you have redefined retirement as an opportunity for growth, fulfillment, and purpose. If everyone in this world adopted your concept, what he calls DGL, or do good in life, this world would be so much better place to live. आप में से कितने लोगों ने सुना है डू गुड इन लाइफ के कॉन्सेप्ट के बारे में? It's an amazing concept, right? So I think it deserves a round of applause for this. Thoughtful Reflections for a Meaningful Life एक उत्कृष्ट कृति है. मुझे इसका प्रीव्यू कॉपी पढ़ने का सौभाग्य मिला है. Your thoughts, Sanjay, cover various phases of life like working life and life post-retirement, as also various aspects of life like relationships, interpersonal and intrapersonal communication, power of appreciation, and many more. Your emphasis on me time or creative and solution finding zone is a reminder to prioritize self-care and individuality. आजकल हम लोग दुनिया से जुड़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि खुद से बात करना भूल गए हैं. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो संजय ने हाईलाइट करी अपनी पुस्तक में. The concept of treating various aspects of life like health, relationships, personal growth, and passion akin to various stocks in portfolio and need for balancing and diversifying it. As we diversify our portfolio, we need to diversify this portfolio also, is very easy to relate to and thought-provoking. I would like to read a paragraph from the book. I quote, the thought is, from toxic stocks to treasured qualities. If we find ourselves with 3 worthless A-category stocks in our portfolio, when we say portfolio means personality portfolio, anger, arrogance, and attitude, let us prioritize getting rid of them at the earliest opportunity. Instead, we should replace them with 3 worthy A-category stocks, namely adorable, affable, and amenable. By making this shift, we can enhance our emotional and relational investment significantly to truly increase our net worth. Let us rely less on external transactions and focus more on internal transformations. By cultivating qualities that enrich our character and strengthen our relationships, we pave the way for a more fulfilling life marked by genuine happiness and deeper connections with others. Unquote. Another aspect of your personality that impresses me is your commitment to social causes and to charity. I am sure you all know the profits from his book and assignments go to a noble charity, which speak again volumes about his personality. यही नहीं, संजय ने खुद भी संजय रुनवाल फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आश्रय और पुनर्वास, दिव्यांगों की देखभाल, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं का कल्याण और पुनर्वास, बेरोजगार युवकों के लिए कौशल विकास, जिम्मेदार हॉकिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना, SBOP के लिविंग के दर्शन को बढ़ावा देना तथा संयमित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के दर्शन को प्रोत्साहित करना. ये सभी विषय सामाजिक कल्याण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं. मुझे याद है जब हम क्वीन मैरी तकनीकी संस्थान में अपनी एल्यूमिनाई बॉडी की एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए गए थे और वहाँ के एक गरीब छात्र के लिए फंड्स के रिक्वायरमेंट की बात सामने आई. संजय ने इमीडिएटली घटनाक्रम को समझा and on the spot he made a decision to support that person. Another incident, it doesn't stop there. Another incident that happened recently, MNIT के एक भूतपूर्व छात्र को एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ उनका और काफ़ी ज़बरदस्त चोटें आई. उनके लिए धन इकट्ठा करने की ज़रूरत सामने आई. Sanjay took it upon himself, he took the lead, made a first big donation
And I'm glad to report within less than a week, we have been able to collect more than 20 lakhs for the student. Thanks, Sanjay, for that. So your dedication to creating a positive impact is truly admirable. I would like to highlight a few more thoughts expressed in your book that resonate with me. Your thoughts on the transformative power of reading, winning the battle of the mind, embracing nuances or rigid thinking, prioritizing self-fulfillment, finding lasting happiness within, owning our mistakes for growth, respecting boundaries in friendships, and the joy of appreciating what we have are particularly relevant in today's fast-paced world. If only we saw how lucky we are with what we have, we would be much more happier. I would like to talk a bit more about the transformative power of reading, यानी कि पढ़ने की परिवर्तनकारी शक्ति and its impact on our lives. वर्तमान समय में जहां हम लोग पढ़ते कम हैं और देखते अधिक हैं, am I right? पढ़ने की परिवर्तनकारी शक्ति को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. हम सब ने सुना होगा, यू बिकम वॉट यू रीड. पढ़ने से हमें नए दृष्टिकोण और विचारों को आत्मसात करने का अवसर मिलता है, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में ही महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं. पढ़ने से न केवल हमें ज्ञान मिलता है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी मदद मिलती है. पढ़ने की आदत डालने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और बेहतर बना सकते हैं, और यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है. आजकल तो हम पुस्तकें प्रिंट में, ई प्रिंट में, ऑडियो बुक्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं. एक और ट्रेंड जो आजकल चला है, कॉन्साइज समरी पढ़ने के रूप में भी. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पढ़ने की आदत को अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को सिखाएं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर. ख़ास तौर से आजकल जब एआई का ज़माना है, सब कुछ हम एआई से सवाल पूछ करके समझना चाहते हैं बजाय खुद पढ़ करके, विच कुड हैव डेंजरस implications इन माई व्यू इन द लॉन्ग टर्म. स्टार्ट रीडिंग एंड टेक बेनिफिट्स, चाहे वह प्रिंट में हो, ई बुक के फॉर्म में हो, ऑडियो बुक्स के फॉर्म में हो, या फिर कॉन्साइज समरी हो, एटलीस्ट पढ़ें. फर्दर, एज वी एज, वी एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन रीडिंग. I will request especially the youngsters present here to expose audio books to seniors in your families. These are available in many languages and for pre and paid versions. My daughter who is here, she just introduced me to audiobooks, and in fact she gifted me one. Dad, use this also. Thank you, Shweta, for that. Flipping through pages of the book and going through it at a slow pace, imbibing thoughts shared by author has its own charm though. While I'm talking about pleasure of reading against, reading a concise summary, an analogy comes to my mind related to one thing that most of us enjoy, namely delicious food. We all do, right? The question I have is, would you want all the nutrients that your body needs in the form of tablets that you can just swallow and move on, or enjoy different flavors that one savors while eating normal food and delicacies? I leave this thought for you all to think through. Dr. Sanjay, your book is not just a collection of thoughts, it's a guide to living a purposeful life. I am confident it will inspire many to rethink their priorities and values. Your daily thought diary mission, which resulted into this book, is a testament to your commitment to sharing wisdom and insights. बात संजय की हो तो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और स्तंभ को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती प्रतिभा जी रुनवाल की, जिनका निरंतर समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन संजय जी के महत्वपूर्ण निर्णयों में मील का पत्थर साबित हुआ है. उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. संजय, मैं आपके सभी प्रयासों में सतत सफलता, संतुष्टि एवं समृद्ध विरासत की कामना करता हूँ. आपके बारे में किसी ने लिखा है, कलम के ऐसे जादूगर विचारों से क्रांति की लौ जगाते हैं. हर शब्द उनका परिवर्तन की पुकार है. वो लेखक ही नहीं, यारों के यार हैं, सदा मदद को तैयार हैं. आपकी नवीनतम पुस्तक अनेक लोगों में जागरूकता लाए, उन्हें सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दें, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें, ऐसी अभिलाषा है.
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली मी. थैंक यू. धन्यवाद. जो बात आपने कही थी, डू गुड इन लाइफ, कौन करता है? तो मैं बताना चाहती हूँ कि इन सभी ने आज से ही ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि आज सब इस विशेष अवसर पर कुछ पाने के लिए, यानी जीवन में अच्छा कुछ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं. तो आप सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. आपने जितनी भी बातें कहीं वो वाकई सटीक और सार्थक बातें थी. Ladies and gentlemen, with immense pleasure, I would like to introduce our chief guest for the evening, Asha Seth. An award-winning blogger, poet and writer, Asha is the visionary force behind MissBookThief.com. नाम सुनिए, MissBookThief.com. किताबें चुराने वाली. India's leading book marketing agency. What began in 2012 as a personal blog born out of her fierce love for books soon transformed into a thriving platform that empowers authors and celebrates literature. With an entrepreneurial spirit deeply rooted in her passion for storytelling, Asha has built MissBookThief.com. किताबें चुराने वाली. सिर्फ चुराती नहीं है, लोगों को बांटती भी है. Into a one-stop destination for authors seeking creative, meaningful and result-driven book marketing solutions. Over the years, MBT.com, short form है उनके इस पूरे उपक्रम का, has worked with a wide spectrum of authors, both Indian and international, from debut writers to best-selling names, helping them bring their stories to the world with care, craft and conviction. With 2.5 million readers globally, Asha is recognized among India's top book bloggers, and her voice in the literary world has resonated widely. MissBookThief.com has been honored with accolades like the Best Indian Book Blog by Indie Blogger and Inspiring Indian Book Blogs by Crossword Bookstores, and has been featured in BuzzFeed, FeedSpot, Literature Times, Rise Insight, Astitva Publication, among others. She is also a marketing partner with leading Indian publishing houses such as Penguin Random House, Rupa Publication, HarperCollins, etc. Beyond blogging and book marketing, Asha is also a passionate poet. She published her first Hindi poetry collection, Devdar Ke Phool, as a heartfelt tribute to her late father, a book that touched countless readers with its simplicity, emotional depth, and love for life. The collection was received with immense warmth by readers, marking her presence in the world of poetry as well. For Asha, books are not just a profession, they are a lifelong calling. Every project she undertakes reflects her deep-rooted belief that stories have the power to transform lives and that authors deserve more than just promotion. They deserve partnership. Through MBT.com and her own literary journey, she continues to champion literature, elevate voices, and build a stronger reading culture, one story at a time. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome her to speak her mind. Good evening, everybody. So I can see everybody here, and it makes me so happy. It's beyond words that I see all of these people here making time to come and talk about books. It is not easy. It is not easy
and it's definitely not simple to take out time on a weekday out of your regular routines. A lot of you probably have come after work, you have handled your day, and you've come here to talk about books, and for that, I honestly thank each and every one of you from the bottom of my heart. I would also like to thank the panel here, Dr. Sanjay and Ms. Pratibha Runwal as well, for blessing me with this honor to come and talk about thoughtful reflections, to come and share some time with you guys and discuss the book. So this is truly an honor. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Now, there's something that I want to, ask you guys. Being between, people who love books, a lot of you are probably also readers. This very seldom happens. There are not many readers left in the world today. So the handful few that are present, they are really, really precious, and they are very special to me. So there is something that I want to ask you guys first. I want to know which is the one book that you guys read and you felt this is it, this is what I needed. Feel free to share your thoughts. Can we just pass the mic around for people to talk, please? Take a moment, think, and please tell me that one book that you felt was close to your heart. Yes, sir. The one that has recently hit me is The Power of One Thought, B.K. Shivani. Okay, Yeah. great, And fantastic. Magic for its simplicity and the way it has converted a book into a workbook. Okay, great. Lovely. Who is next? Yeah, Yes, good ma'am. evening, everyone. The book that impressed me and the currently that I have read is Elephant Song, written by Wilbur Smith. It is on the background of Africa, and Okay. it touched my heart very much, so I wanted to share that. Thank you. Great. Thank you so much, ma'am. Anyone else who wants to There is- share? Yeah, there is a book, The One Thing. It talks about centeredness. It talks about how do you level up in life. It's a very short, small book, and I think it's quite impactful. Great. Thank you, sir. One book which I really not only read but practiced it in my life. That was The 7 Habits by Stu Covey. Great. I personally love that book a lot. Thank you. Thank you so much, sir. So, okay. The Power of Now. And another book I liked was The 5 People You Meet in Heaven. I don't remember the author. Mitch Albom. That's Mitch Albom. Yes, Mitch Albom. That's Yes. right, yes. Great. All right. So thank you so much. Now, One more book I Yes, would like sir. to. First things first. first things first. And I have practiced the suggestions given by that author. So today I would like to also encourage all the people, as you suggested, after this program, first things first, go to the counter and get the latest book. Great, great. All right. I have read, I used to read before a lot, then some gap came in between. But after Sanjay Runwal's book, SBOP Living, I've really, it has changed my life. And I've started thinking about life after 55 and 60 and started to live according to it. Great. That's fantastic. Thank you so much. So I thank everybody here who's shared their thoughts. That just shows how many book lovers and readers we have amongst us. People who truly believe that, books
definitely are magical. They carry some magic inside themselves between the pages, and they've got the power to change lives. Now, why did you, why do you remember these books? Now, I have read close to 800 books in my life so far. Do I remember all of them? So, no, I don't feel too proud about it, but it's just not the capacity of the human brain. But having said that, there are books that did stick. And I ask why. The books or the stories that stick with us are the ones that left an impact. They changed something inside of you. They spoke to you. Those are the books we remember. And one such book is Thoughtful Reflections that we are going to talk about today. Now, the first book actually that I had read by Dr. Sanjay was SBOP Living, How to Live Life After 55-60. And this book, the least, thing that it made me feel was there is so much to do in life yet. The most important thought that it conveyed was retiring doesn't mean that you've retired from life, right? Retirement from your job, your responsibilities, your work, but you still have to live life. And this book was about how to plan your life post-retirement, how to live a meaningful, a purposeful, and a satisfactory life. So that was the first book that I read. And it was beautiful. And that is still an understatement. Because even at this age where, I am still some time away from retirement, I believe. And even at this age, I could feel the power, the magic of that book. I knew what I want to do, the things that I want to change. And I think everybody that I was meeting after reading that book, I was literally shaking them. And I was telling them, here, read this book. And they would just look at the cover and they would tell me how to live life after 55-60. Are you crazy? And I was like, no, you've got to read this now. Because that book is not for when you hit 60. It's to start planning for life after 60, but that's not going to happen at 60. It's going to happen today. So that book left quite an impact. There's a lot of things that I learned from it. And trust me, Dr. Sanjay, I'm trying to implement those things in life. A lot of those things are helping. So, the next book then, because SBOP Living was about life after retirement. And then comes a book, which I think was something that I was missing. And this was Thoughtful Reflections. So when I spoke to Dr. Sanjay about the book, I knew that I've got to read this. And it was only because there has to be something, there has to be some handbook, some guide, some piece of literature that's applicable at any and every age. Thoughtful Reflections was that book. It's for you, it's for your child, it's for your parent. It's for every age and every phase of life. It has got 401 thoughts from Dr. Sanjay's life. He's written them down with a view to help you change something about your life that you can't find answers to probably. It is to reflect, to introspect upon, and probably seek those answers inside of you. So in a way, this was very, very powerful. And the core idea, or let me rather frame it better, it was inspired by His Highness Dalai Lama's Book of Meditations. So it has a similar vibe. It has a similar energy, which is vibrant, which is very positive. It is subtle. It is simple. But you know what? It is not. It's not easy. And I'll tell you why I say this. It's very easy for us as humans to go and tell somebody what they should be doing in their life. Are we
so open to it when it comes to our own life? How often are we accepting of change? In that sense, it persuades you to look into your life and change it one thought at a time, one thought in a day. So that's thoughtful reflections for you. Like I said, that this book is for everybody, and it is not a book to be read, but it's a book to be lived. And personally, you want to skim through it. I was lucky enough to receive an advance copy to read the book. And I just wanted to skim through it. Just breeze through it. Every part was so relevant. Every page, every thought was speaking to me. And I wanted to skim through it. But that's not the right way to do it. Once you get your hands on it, read one thought a day. Sleep with it. Let it sink inside of you. Let it change you. Now, if I have to talk about the applicability of the book, in the sense how exactly is it going to be useful to you? Of course, a lot of you are thinking, what is in it for me? As readers, I am very picky because time is of essence, time is precious, and I definitely want to make sure that I'm investing my time in the right thing. So yes, I am a little picky when I'm reading books, and some of you might be thinking, what is in it for me? So applicability becomes very important, and I am going to share a piece of real life experience followed by why this book is the right answer. Now, life is chaotic. I'm sure a lot of you have made it here. Not so easy way, right? Traffic, the weather, life, responsibilities, kids, but you made it here. So yes, it's a mess. The mind is a mess a lot of the times. Our actions, we are, impulsive at times, we are jumpy, but that is life in all its beauty still. So I'll share an experience related to this. Now, this was from few years back. I was at work, it was a normal day. It was a beautiful morning in August, perhaps it was, I guess. It was raining, the kind of day when you want to just, sit back, relax, have a cup of tea, maybe read something, maybe just watch Tom and Jerry on the TV. That kind of day. And I'm about to start my day, and the junior writer from my team, he sends me a message on WhatsApp, on personal. Here this is. So I get this message and he says, "Hey Captain, my car broke down. I'm taking it to the garage. I'm sorry, but I can't make it to work today." And I'm like, okay, fair enough. Shit happens. It's monsoons, it's Mumbai. Fair. I let it go. The next instant, another message pops from the same guy on our work WhatsApp group where we have about 20 people. And the message is, "Hey guys, trip is on. See you at Kirti Vada Pav in 15. Right? So, I'm not judging him. Right? It's all of us at some or the other point during the day. So I'm not judging him. Bad timing, maybe. Absence of mind, definitely. Right? So we do that. We live like machines. We dream like poets. We preach like monks. But in the end, we mess up by sending the wrong message to the wrong group at the right time. Right? The struggle is real, friends. From that perspective, this is why thoughtful reflections is so important. It's a book to pause, to reflect, and to reassess your life. Talking about that, I will quickly take you to a few of the things that I found helpful from the book. And I am not sharing these thoughts with you so that, I
feel that, okay, you're going to find it relevant. But I'm going to share these thoughts with you because somewhere I am trying to implement these in my life. And I know that they are proving to be helpful, really helpful to me as a person. And if it only makes you think about it, my job here is done. So the first thing that I felt was really important and relevant and timeless is the power of pausing. Now there's a line, in the book, in this part, that Dr. Sanjay has shared, which hit home, and that was, when you pause, you catch up with yourself. Now, life is so busy. It's almost a race that we are running. We are chasing things. We are catching up with dreams, deadlines, friends, flights. How often do we catch up with ourselves? So, the power of pausing is about take the time to pause before reacting, before replying, maybe even before ordering something randomly online at 1 o'clock in the night. You never know. It could save you unnecessary arguments, save some relationships, and also some pretty pennies. The next one, very, very important, relating back to the WhatsApp joke. Mental decluttering was one that I found very useful because, come on, let's face it, we declutter our houses on Diwali. On birthdays, we probably also declutter our wardrobes, get new stuff. When do we declutter our minds? It's like an overstuffed suitcases of stuff, of memories. So it's time to declutter the mind, and this part about the book really spoke to me. Because only when you declutter through rituals like journaling, like pranayam, like meditation, you let go of a lot of things that are not required. So peace, as this particular thought in the book highlights, peace isn't missing from our lives. It's just buried deep under the layers of stress, of grudges, of vengeance. And we really need these things in life. And finally, this is something that we need at every age and phase of life, and that is the power of apologizing. Why do we feel that we become small if we apologize to somebody? Why do we feel it's going to hurt our ego, or it's going to we are going to lose face, basically? This is a myth. This is just a mental block. And there is a very beautiful, way this is explained in the book, which is apologizing isn't about losing face. It's about reclaiming peace. So apologizing isn't for the person you're apologizing to. It's for yourself, if you think about it. It's for your own mental peace. It's healing, in a way. And honestly, all those Instagram reels and messages aside, this is true adulting in our times. Now moving on to, I think I also want to talk about, who this book is for. I think we've already established it. But everybody who is a silent warrior, who is fighting their day through, who feels that, they have nobody to talk to. But not just them. It's everyone like us, you and me, who is just trying to get control of life, just trying to make sense of it, It's for people like us. The book is, in a way, telling you that it's okay. You're going to be okay. You know what? Just take this today. And that small, dose of positivity, that small dose of change is what you need to just get through that day. So, this book won't lecture you. It won't ask you for unrealistic commitments. It won't tell you that manifest a Ferrari by Friday.
it's not that. It's going to give you real action-based ideas, real transformative bites from wisdom of years coming from Dr. Sanjay Runwal. So this is what the book is about. It is 401 revolutions. It is 401 chances to better your life. Okay, I guess I've spoken a lot, and that's how I feel when I talk about thoughtful reflections, because I think I could go on and on. So I think a 15-minute window, Dr. Sanjay, is not enough. But anybody who feels like they want to talk about this book, I am available on missbookthief.com. And I promise you, I won't steal your books. Yeah. Or maybe I can't promise that. So, today, I've had this wonderful opportunity to talk about books. One particular book, especially, Thoughtful Reflections, which kind of becomes a favorite. And for me, it is very difficult to choose my favorite among favorites. But this book sort of hits that shelf because of what it is capable of. So I leave you with this thought. Get this book. Don't read it. I mean, of course, read it, but don't just read it. Live it. Live it, reflect upon it. And yes, gift it. Gift it to as many people as possible. Have one on your nightstand. Carry one in your tote bags, perhaps, to work. But read it, live it, let it sink inside of you, let it speak to you. And you'll realize that it's a friend you're talking to. And even after all this, if you are wondering, can a book really change your life? So let me tell you this. One book is a lot cheaper than therapy, guys. Right? And one book is definitely lesser drama than talking to relatives. Right? So for all those things where you feel that, you need to share it with somebody, share it with this book. Let it talk to you. With that, I would like to thank each and every one of you today once again for being here, taking the time out of your life, the precious time out. Thank you once again, Dr. Sanjay, Pratibha ma'am, and sir, for having me here and talk about books and talk about thoughtful reflections. Good evening. Thank you so much. कुछ बातें बहुत ही मीठी सी मुस्कान के साथ आप तक पहुंचाई हैं आशा जी ने, और मुझे लगता है कि वो जो शहद के साथ दी जाने वाली गोली होती है वो असर करती है, वैसा ही असर आपकी बातों ने किया है हम सब पर. थैंक यू सो मच. और अब समय आ गया है कि आप सबकी साक्षी में हम आज की इस किताब का प्रकाशन करें. मैं विंग कमांडर विद्याकांत जी काला, award winning blogger, author and book reviewer Asha Seth, and a wonderful speaker too, डॉक्टर संजय रुनवाल जी, प्रतिभा रुनवाल जी, सारिका रुनवाल खोड़दे और गिरिराज खोड़दे, आप सभी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हम सब मिलकर इस बेहद सुंदर सी पुस्तक का प्रकाशन करते हैं.
तालियों के साथ हम इस नई पीढ़ी का स्वागत करें। सारिका रुनवाल खोड़दे और गिरिराज खोड़दे। और जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं देते हैं इस पुस्तक के लिए और यही कामना करते हैं कि संजय जी आगे भी ऐसी ही कई पुस्तकें लिखते रहें हम सभी के लिए। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि ये शुरुआत है हमारी ज़िंदगी के बदलने की। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर संजय रुनवाल से आग्रह करती हूँ कि कृपया मंच पर बने रहें और हमारे जो अतिथि हैं उनसे आग्रह कि कृपया अपना स्थान मंच के सामने ग्रहण करें।